Hello everyone, welcome back again. So as you all know that we are doing our communication series. So in the continuation with the series, in this video I'm going to tell you about the channels of communication. See, first of all we will try to understand what are the channels of communication, why it is needed, right? देखिए ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन है। हमें अपनी हर छोटी से छोटी या बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लेते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ उस वर्क स्पेस में जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है और साइडवेज होता है। मतलब मल्टीपल तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आपके सीनियर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं, आपके जूनियर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप सेम लेवल पे जो कलीग्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। मतलब मल्टीपल सोर्सेस हैं जिससे आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है। इवन अगर हम अपनी इंडिविजुअली बात करें और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करें, तो आज भी हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडियाज है, वे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या हो सकती है, वेरी भी कर सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इफ somebody asks you to define the channels of communication, so the channels of communication means when the information flow, right, in the process of communication, when the information flows forward, backward and sideways, means there are different kinds of or multiple sources of information we are getting, right? So these flow of information we get with the help of various channels, right? So here it is needed to understand the concept of channels of communication, as well as we will understand why it is necessary to use effective communication channel, or we can say the right communication channel, right? If we are using the correct channel of communication for giving information to the recipient, then definitely it is going to optimize your work productivity, and it ensure the smooth functioning of the organization or any kind of your work, either you are doing formally or इनफॉर्मली। सो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सही सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज करेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने में। अगर ऐसा करते हैं तो जो भी आप काम करेंगे उसका वर्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, एज वेल एज वो काम बहुत पूरे और अच्छे ढंग से कंप्लीट होगा। So let's move to the channels of communication, the types of channels of communication, right? Moving to the next slide. So as you can see in your screen, here a chart has been given. You can see it very clearly that channels of communication broadly divided into two parts. First one is formal and the second one is informal. So the formal part, formal means, as you know, that formal communication means the communication which is bounded by various kinds of rules and regulation, where we have to follow a decorum, right? And the informal communication, when we are communicating with our very close one, with our family members, where we do not mind about following the rules and regulation, as well as we do not choose the correct or not, we cannot say correct, but we do not choose the decorum vocabulary. Means in the informal way of communication we became very jovial, we became very much flexible, but in the formal communication we have to think before speak or think before writing, right? तो formal और informal में divided है। Rest we can see that formal communication, formal channels of communication is further divided into two parts. One is vertical and the second one is horizontal, right? And the informal communication is divided into one part. Example of informal communication is given here, that is grapevine communication. Let me make you understand twice कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और एक डेकोरम को फॉलो करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट
करने में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जब हम अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, अपने क्लोज वन से बातचीत करते हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान नहीं रखते और हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते कि एक अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करें, राइट। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल को समझने के लिए उसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक पार्ट दिया गया है जिसका नेम है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सो दिस इज द चार्ट ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो इसमें हम अभी एक वर्टिकल कम्युनिकेशन ही लेंगे और इसके फर्दर जो पार्ट आएंगे उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो लेट्स सी अगेन द फॉर्मल कम्युनिकेशन. So formal communication channels carry the official messages in the organization. So formal communication is all about the following the official rules and regulation. Means whatever the message get official, so it has more of responsibility. So for completing that responsibility of communication, we use our फॉर्मल चैनल्स। तो हम किसका यूज करते हैं? अपने फॉर्मल चैनल्स का यूज करते हैं किसी भी ऑफिशियल मैसेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट। सेकेंड है, इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सच एज गोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जितना भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जो भी चैनल्स उसको ले जाएगा उस कम्युनिकेशन को, तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि उन यूजफुल इंफॉर्मेशन में आ सकता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को डिस्कस कर रही है, अपनी पॉलिसीज को डिस्कस कर रही है, एज वेल एज दे अपनी कंपनी के प्रोसीजर को बता रही है, या फिर क्लाइंट से डील कर रही है, या इसके अलावा कोई भी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है, तो फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे ट्रांसफर करेगा। तो इसीलिए इसका नाम है फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस अ चेन ऑफ कमांड इज फॉलो टू कम्युनिकेट। फॉर्मल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लास्ट वन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन फॉलो डिफरेंट डायरेक्शन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कि वो दो अलग अलग डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। फर्स्ट वन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट। तो देखिए, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो भी आपका होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाट इज द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, what are the needs to get the formal channels of communication, as well as I hope it is clear to you about the channels of communication, the parts of it, right? Like the channels of communication divided into two parts. Do remember that formal and informal. Formal part is further divided into vertical and horizontal, and the example of informal communication has been given, that is grapevine communication. We are going to learn each and every channel of communication in detail in our next video. So that's all for today. Thank you so much for your listening. Stay tuned for the next part. Thank you so much.